done classification and characteristics. Now the next thing which we are going to do is adaptation. Adaptation means to change ourselves according to the outside environment. Like we human beings, that I have told you that in summers we wear cotton clothes. We change ourselves according to the outside environment. Even in winters we wear woolen clothes. Why we wear woolen clothes? Obviously to protect ourselves from cold. If we will not wear woolen clothes, obviously we will catch cold and we will get ill. Therefore we change ourselves. Not only the human beings, even animals. Animals also change themselves. It's not like the change जो animals ने खुद में change लाया वो एक दो दिन में आएगा. No, it has been developed over years. सालों लगे हैं. So the animals and their few adaptations which we will discuss now. Firstly, जो animals dense forest में रहते हैं, जो animals dense forest में रहते हैं वो sound signals use करते हैं, sound use करते हैं चेक करने के लिए कि उनका पार्टनर किधर है, या उन्हें अपनी सेफ्टी चेक करने के लिए कि कहीं कोई और एनिमल उन पर अटैक तो नहीं करने वाला. सो जो साउंड सिग्नल्स वो यूज़ करते हैं एज अ सेफ्टी, उन्हें हम टेरिटोरियल कॉल्स या अलार्म कॉल्स भी कहते हैं. डेंस फॉरेस्ट में यूजुअली एनिमल्स जो है या तो वो अपना लिम्स लाइक लेग्स, जिसे लाइक ह्यूमन बींग्स के लेग्स है वैसे ही जितने भी मंकीज हैं उनके लिम्स हैं, या क्लॉज मीन्स उनके जो पंजे हैं वो. सो आइदर दे यूज लिम्स और क्लॉज टू होल्ड देमसेल्व्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. मंकीज यूजुअली जो है वो लिम्स यूज करते हैं टू होल्ड देम ऑन द ब्रांचेस. ये अडेप्टेशन है कि सिर्फ मंकीज ही कर सकते हैं, राइट. टॉकिंग अबाउट चीता. चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल. अब चीता फास्टेस्ट एनिमल क्यों है? द रीजन इज कि उसके पास पावरफुल लेग्स हैं, लेग्स आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. लाइक जैसे अब हम लोग दौड़ते हैं, रन करते हैं, वी ऑलवेज फील एयर कमिंग टुवर्ड्स और एट आवर फेस. स्ट्रीमलाइन बॉडी में जो एयर की जो रेजिस्टेंस है या अपोजिशन है जो एयर का वो सबसे कम होता है. देयरफॉर स्ट्रीमलाइन बॉडी है, पावरफुल लेग्स है, इसीलिए ही चीता जो है वो सबसे फास्टेस्ट एनिमल है. Now talking about elephant, you all have seen elephant or you all must have ride elephant also. Elephant की एक जो सबसे important उनका characteristic है वो है उनकी long trunk. Like we human beings we use our hands to hold the things like or to drink water. उसी तरह से elephants they use their trunk to drink water. Their long trunk they just don't use their long trunk to drink water. सिर्फ पानी पीने के लिए, इन चीज़ों को होल्ड करने के लिए. एलिफेंट की जो लॉन्ग ट्रंक है वो उनके नोज और अपर लिप का एक कॉम्बिनेशन है. ट्रंक है, लॉन्ग है, चीज़ें होल्ड करने में हेल्प करती हैं, वाटर ड्रिंक करने में, या कोई भी चीज़ जो उन्हें खानी है ऑब्वियसली दे टेक इट टू देयर माउथ. तो एज अ हैंड काम करती है वो लॉन्ग ट्रंक एलिफेंट्स के केस में. अब है हिप्पोपोटामस. Hippopotamus usually swampy areas में रहते हैं, which means muddy areas, दलदली areas. Hippopotamus they have a very thick fatty skin. उनकी skin के नीचे बहुत सारा fat है, which helps them to float on water. Usually hippopotamus की जो eyes हैं, जो ears हैं, वो हमेशा बाहर को रहते हैं, वो ऊपर की तरफ मतलब head की तरफ है. ऐसा क्यों है? अब क्यों? क्योंकि hippopotamus swampy areas में, दलदली areas में रहते हैं, तो उनकी बॉडी का जो यूजुअली आधे से ज़्यादा पार्ट जो है इट इज इमर्स्ड इन वाटर में होता है. Therefore, so that the hippopotamus can see and breathe very easily, therefore the eyes, nose and ears they are located on the head of the hippopotamus. तो ये भी एक adaptation है hippopotamus की, क्योंकि उसको swampy areas में रहना है, वहाँ पे ज़्यादा पानी है, right? सारा time it will be immersed in water, so that to protect and to see इनकी आईज, ईयर्स और नोज जो है वो हेड की तरफ, ऊपर की तरफ. नाउ द रेनडियर्स. रेनडियर्स जो है यूजुअली हिली एरियाज या स्नोई एरियाज जहाँ पे स्नो पड़ती है, दे आर फाउंड देयर. दे हैव वाइट हूव्स. हूव्स मीन्स लाइक सिंग, लाइक दे हैव वेरी वाइट हूव्स which protect them or which we can say protect them from the snow, कि स्नो में वो दब ना जाए.
they have white boots. Now talking about the hot deserts, जो animals hot desert में रहते हैं वो है nocturnal animals. मैंने बताया कि nocturnal animals they are active during night time and they are inactive during the day. क्योंकि डेजर्ट एरियाज में बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि डेजर्ट एरियाज they have very high temperature. Therefore, the animals they usually are inactive during the daytime. They burrow themselves in the sand and live there in the cold temperature, in the cold area. And when the night comes or रात को they came outside from their burrows and searched for food. So this was the few adaptations we have discussed about the animals living in dense forests and about the different animals and animals living in hot deserts. About the adaptation of the other animals. As I told you that adaptation means to change ourselves. So the animals who change themselves according to the temperature, according to their outside environment. Now the camels. We all know that camel is called the ship of the desert. Camels have wide feet. Why camels have wide feet? Camels have wide feet so that they, because in desert areas there is a lot of sand, so that they don't get like sand में वो फंस ना जाए, उनके पैर ना फंस जाए. Therefore they have wide feet. जितना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, we all know अगर कोई चीज़ जितनी ज़्यादा वाइड होगी वो उतनी ज़्यादा एरिया कवर करेगी. जो चीज़ जितनी कम वाइड होगी obviously वो उतनी easily जो है नीचे धंस जाएगी. So camels have wide feet which help them to not sink in the sand. They have the ability of camouflage. Camouflage का मतलब है कि skin color, change in skin color. When animals they change their skin color. Usually animals camouflage की ability इसलिए use करते हैं so that to protect themselves from the other prey. कैमोफ्लाज की सबसे ज़्यादा जो एबिलिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो है, इट इज़ सीन इन ऑक्टोपस एंड कैमलियंस. Camels also use camouflage ability. They have light skin color so that they protect themselves in deserts from the prey. Talking about snakes. Snakes, they are reptiles. They have scaly skins. They have fangs. As you have seen that snakes usually they have two fangs like this, the front teeth through which they inject venom. Venom means the poisonous liquid. It's like a syringe. जैसे syringe में से या पानी जो है या कोई भी मेडिसिन है वो एकदम syringe में से बाहर निकलती है, इसी तरह से जो snakes हैं अपने venoms में से वो अपने fangs में से वो venom inject करते हैं. जो front two teeth हमें दिखते हैं snakes के, they are known as fangs and they usually inject or spit venom to protect themselves from the prey. Talking about bats. Bats, as I told you, nocturnal animals. They are inactive during day but active during the night. Bats चाहे nocturnal animals हैं but they have very bad vision. इनमें जो देखने की ability है वो बहुत, vision मतलब देखने की ability, जो रात में देखने की ability है वो बहुत ही खराब है. They can easily see. इसीलिए वो ecolation का process use करते हैं. Ecolation के process का में क्या होता है? Bats use sound. When they say something or when they produce sound, और जब sound किसी hard चीज़ पे लग के टकरा के वापस आता है, that is known as ecolation. अगर bats के सामने कोई animal है, कोई wall है जैसे, ठीक है, और अगर उन्होंने sound produce किया, for example ये wall है, bats ने अगर कोई sound produce किया तो वो sound जो है vibrate होके जाएगा और फिर टकरा के वापस आएगा, जिससे बैट को ये पता चल जाएगा कि आगे कोई वॉल या कोई प्रे है, so that he can protect himself. Now birds. Birds we have already discussed characteristics of vertebrates में कि birds जो है they have very, इनके bones और skulls they are very thin and they are extremely light. क्योंकि birds उनको air में fly करना है, they have feathers or wings to fly, therefore they have very extremely light body. एक्सट्रीमली लाइट, बहुत हल्की होती है इनकी बॉडी, जिसकी वजह से ये बहुत इजीली जो है एयर में उड़ सकते हैं. दे कैन फ्लाई इन एयर. सील.
live both on land and ice. They have adapted themselves. Seals में जैसे fishes में fins हैं to help them swim. Seals में flippers हैं. They have flippers which flip and which help them to walk on land, and these flippers help them to float or move in ice or cold water. Jellyfish. Jellyfish, they have tentacles. These tentacles help them to swim, no doubt, but they also help them to protect them. Tentacles they have a little stings in them which protect them from the prey. Marsupials. Now talking about marsupials. Marsupials, they are part of mammals. Mammals, the animals which give birth to young ones. Marsupials में एक abdominal pouch होता है. Marsupials की सबसे best examples है kangaroos. As you all have seen कि kangaroos में abdominal एक pouch होता है. Whenever they give birth to young one, till few months, 6 months or what, they keep them in their pouch, in abdominal pouch. जैसे हमारे पास वो fruits की थैली होती है, right? Just like that, they have a pouch, abdominal pouch on their body near their stomach. That pouch is known as marsupium. और जो animals जिनके पास pouch होता है, they are known as marsupials. और इसकी best example है kangaroos. So this was a few part of adaptation. To discuss about the remaining part of the chapter, the adaptation, and about the characteristics of the primates. Birds and fishes, as I told you, that usually animals, they change themselves or they adapt according to their changing outside environment. Winters may usually birds and fishes, they both fly to warm regions, to warm areas. Birds in autumn or during winter seasons, they travel, and whereas fishes, they dive deep in the sea and ocean for walk. As I told, birds and fishes, they both are warm-blooded animals. Warm-blooded animals, it means their body temperature is constant. तो उनको body temperature outside environment के साथ change नहीं होगा. इसी वजह से cold seasons में या winter seasons में birds, they migrate to warm regions, whereas fishes, they dive or swim deep in the sea to get the warmness. So migration is the another adaptation or change which birds and fishes, they change themselves and they just migrate from their home place to the place which is warmer. Now talking about the characteristics of primates. The examples of primates are chimpanzee, monkey, gorilla, monkey, and human. So pyramids, they are very highly developed. As we humans, we also are very developed. We have a very developed brain. All the pyramids, they have very developed brains which help us in thinking, taking decisions, to know what we are doing and what we have to say. Sense of color. We know the difference between color. It is white in color. The board is green in color. So we have developed a sense of color. हम लोगों में color differentiation की sense है. Then have communication skills, language. Chimpanzees, gorillas, humans, monkeys, we have our own language to talk. We use different languages, our mother tongue, to talk. Then have limbs and legs. Monkeys, gorillas, they all use limbs to climb in the branches, whereas we human beings, we are the exception in pyramids. We use legs to walk or to run. Pyramids, they all are social animals. Social animal means that they all stay together in a group. They like to be in group. For example, like gorillas, even we humans, we have a strong bond towards our family, towards our relatives. Same as the gorilla, chimpanzee and monkey, they have this strong bond towards each other. So pyramids, they are social animals. Now pyramids have one more important thing, that as I told you, that mammals, they give birth to young ones, and the female, they give birth to young ones. So the females, the animal or the human being, they are fully formed in the mother's womb. Or they are fully formed. The main important characteristics are
द स्किल्स है हमारे पास बात करने के लिए, हम लेग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए। सोशल एनिमल है, वी हैव फैमिली, वी हैव फ्रेंड्स, और हमारा बर्थ जो है हमारे मदर वॉर्म में होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो नियर एक्सटिंक्शन होती है। एक्सटिंक्शन का मतलब है ख़त्म होने के नज़दीक होती हैं, जैसे डायनासोर्स हैं, डोडो है। दीज आर दी एनिमल्स विच हैव बीन एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म हो चुकी हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाते हैं हमारे पास टाइगर। टाइगर जो है पहले वो ख़त्म होने के नज़दीक थे, पर अब इनकी स्पीशीज जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ द लॉज which are made to protect the tigers. Even you have seen doves, right? There are few birds which we rarely see because they have become endangered, and there are sanctuaries, national parks to protect the endangered species. So this was all about the adaptation, and the chapter is finished. That is animals.